Hi, and welcome back to my channel of Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. In my last video, I gave you an introduction about disruptive impulse control disorder. Today, we will talk about impulse control disorder, that is oppositional defiant disorder, ODD. Okay, what happens in oppositional defiant disorder? We will talk about that and how to treat it. Okay, oppositional defiant disorder is a childhood condition characterized by difficulties regulating emotions and behaviors. एक childhood disorders है और जो बाद में भी हो सकता है. ओके एंड ये स्टार्टिंग से चाइल्डहुड से ही चला आता है और इसमें इमोशंस और बिहेवियर को आप अपना रेगुलेट नहीं कर पाते हैं. स्पेसिफिकली इश्यूज विद इमोशन रेगुलेशन ऑफन मैनिफेस्ट एज फ्रीक्वेंट एंगर एंड इरिटेशन केस में, whereas behavioral dysregulation is evident in episodes of argumentatives and defiance. Professionally, typically diagnosed ODD in children or young adolescent. चिल्ड्रन और यंग एडोलेसेंट में होता है. ओडीडी वर्सेस कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या क्या होता है? Oppositional defiant disorder and conduct disorder are both behaviorally disorders that commonly appear in childhood and adolescence. However, ODD is characterized by argumentative and defiant behavior, whereas conduct disorder involves more serious and aggressive behavior. यहाँ पे जो ODD है आपका चाइल्डहुड एडोलेसेंस में होता है, और लेकिन जो कंडक्ट डिसऑर्डर है आपका सीरियस और अग्रेसिव बिहेवियर में आता है. ODD symptoms in children and adolescents often include defiant and argumentative behavior toward authority figures. अथॉरिटी फिगर्स के ऊपर सबसे ज्यादा आपका बिहेवियर खराब रहता है. डिफाइंड और आर्गुमेंटेटिव होता है, उनके ऊपर अथॉरिटी कोई दिखा नहीं सकता. सच एज पेरेंट्स, टीचर्स और एडल्ट्स, चिल्ड्रन में frequently argue, refuse to comply with rules, deliberately annoy others and avoid taking response for mistakes. कोई भी मिस्टेक करेंगे उसका रिस्पॉन्स नहीं लेंगे. ऑन द अदर हैंड, कंडक्ट डिसऑर्डर में इन्वॉल्व physical aggression towards other people, or destruction of property and disregarding rules and the rights of other. So ये difference है conduct disorder और ODD में. ठीक है, let's talk about ODD versus ADHD. क्या difference है? ODD and attention deficit disorder may share overlapping symptoms but have distinctive characteristics. ODD causes argumentative, irritable, and vindictive behavior. Children and adolescents with ODD defy rules and authority figures, frequently lose their temper and act spitefully. Those with ADHD struggle with attention, hyperactivity, and impulsivity. While they may act impulsively without considering consequences, they do not typically engage in blatantly disrespectful or arduous action. यहाँ पे impulsive तो आज हो सकता है, लेकिन आपका blatantly और disrespectful नहीं होंगे, लेकिन ODD वाले disrespectful हो सकते हैं. ठीक है, let's talk about symptoms. ठीक है, children and teens often display marked difficulty in the relationship with adults, difficulty of relationship with adults. ठीक है, perhaps even to the point of parental abuse भी हो सकता है इसमें. Oppositional behavior, क्योंकि वो authority figure दिखाएंगे और ये authority figure के साथ इनका behavior अच्छा नहीं होता है. Oppositional behaviors can be typical feature across development. For example, tantrums commonly occur in preschool children, and adolescents are prone to limit testing. अपना लिमिट टेस्ट करने के हमेशा सोचते रहते हैं. Furthermore, individuals with oppositional defiant disorder often report their responses are reasonable reaction to unjust expectation or unreasonable circumstances. Below are common oppositional defiant disorder symptoms. क्या क्या common आपके defiant disorders के symptom है? Frequent angry outbursts, easily losing temper, easily annoyed with others. Defined behaviors में क्या हो सकता है? Arguing with adults or authority figures. Blaming आपका हो सकता है others for their mistakes or behavior. Bluntly defying rules or authority, upsetting others purposefully. और आपका क्या हो सकता है? Vindictive behaviors में purposefully saying cruel and mean things to others. Becoming vindictive when upset and using vindictive or manipulative behaviors at least twice in 6 months. कॉजेज में क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके आ सकते हैं कॉजेज में, जैसे किसी को बहुत ज्यादा ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, risk of developing ODD, and can have a negative environmental factors such as direct or indirect exposure to violence. अगर आपकी फैमिली में वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर वो शुरू से ही ऐसी movies देख रहा है बच्चा, then it can happen. Financially problems and instability, family environment can also create stressors that contribute to the development.
बहुत ज्यादा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसका ट्रॉमा हो रहा है तो उस वजह से भी हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बायोलॉजिकली ओडीडी में बी एसोसिएटेड विद न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस इन द ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस है ब्रेन में, और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है न्यूरोट्रांसमीटर्स, और दैट इज व्हाई द अनईजीनेस है। इमोशनल रेगुलेशन से प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर उसके बाद people, although more research is needed, studies have suggested differences in serotonin and dopamine system in individuals with ODD. Genetical factors आ सकते हैं। People with parents with schizophrenia or bipolar disorders can also have children with having this disorder. Researchers indicates a genetic component can contribute to disruptive behavior disorder, including ODD. Children and teens may inherit genes that make them more susceptible to developing the condition. However, genetics alone cannot fully explain the occurrence of ODD. Fully explain नहीं कर सकता है, ठीक है। It can be like a dormant characteristic which is coming up in the children, and later on if there is a trauma or something which is coming up, उसके साथ साथ ये निकलते रहते हैं, आपके सिम्टम्स आ जाते हैं बाहर। पेरेंट्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स को भी हो सकता है, उनके बच्चों को हो सकता है। बीइंग रेज्ड बाय पेरेंट्स विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स सच एज एडीडी, एडीएचडी और ओटीडी और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। पुअर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, आपका पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अगर अच्छा नहीं है, लैक ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेटजीज कैन, आपका पेरेंटिंग अच्छी नहीं है तो इट्स कैन आल्सो हैपन, इट कैन आल्सो बी अ कॉज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। पीपल विद पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटीडी इन चिल्ड्रन, डिप्रेशन हो सकता है उन बच्चों को। चिल्ड्रन ओटीडी में एक्सपीरियंस comorbid depression due to persistent oppositional and defiant behaviors, social difficulties and negative interaction they may account कर, एंजाइटी हो सकता है, चाइल्डहुड एंजाइटी, सब्सटेंस यूज हो सकता है, एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सकती है, इम्पल्सिविटी हो सकती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड भी हो सकता है। यहाँ पे सेल्फ हार्म, फ्रस्ट्रेशनस और होपलेसनेस की वजह से सेल्फ हार्म और सुसाइडल आइडिएशन। तो आपको कोमॉर्बिडिटी में यहाँ पे और आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आ सकते हैं, एडीएचडी आ सकती है, कोमॉर्बिडिटी में आपका एंजाइटी आ सकती है, और आपका मूड डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। So this is all about if you want to write an exam, you can do that. And ODD में obtaining an ODD diagnosis कैसे करेंगे? Obtaining an oppositional defiant disorder diagnosis typically involves comprehensive evaluation, interviews with child and the parent. आपको कुछ questions देंगे, उसको आपको answers देना, then we can check. A mental health professional will assess symptoms and determine if a child meets ODD criteria according to the DSM-5. The DSM-5 criteria ODD include a pattern of angry, irritable mood, argumentative, defiant behavior, or vindictiveness lasting at least 6 months towards one or individual। 6 months का के लिए होना चाहिए और उससे more। Assessment also consider characteristics of ODD, such as persistent pattern of positional and defined behavior, disregard for authority and difficulties in regulating emotions। ये आपका ODD डायग्नोसिस ऐसे कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपको बताया था पहले, फैमिली थेरेपी जिसमें फैमिली को समझा सकते हैं कि आप कैसे रीइंफोर्समेंट करोगे, ठीक है, और नेगेटिव जितना भी बिहेवियर है उसको कैसे बताओगे बच्चों को, और पॉजिटिव बिहेवियर को कैसे बताओगे। प्ले थेरेपी कैन बी बेनिफिट, वर्जीनिया एक्सलाइन की प्ले थेरेपी कैन बी बेनिफिटेड यंग चिल्ड्रन विद ओडीडी बाय एनकरेजिंग देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू प्ले। Group therapy involves participating in therapy session with peers facing similarities, providing an opportunity for social skill development, empathy, and support. So this is, and medications में ODD can be helpful for individuals with co-occurring disorders। जैसे आपका ADD, ADHD और ODD है तो वहाँ पे blood pressure medications such as clonidine और external can help externalizing behaviors, और एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं। स्कूल इंटरवेंशंस भी हो सकता है, अगर स्कूल आपको बता रहा है कैसा आपका बिहेवियर है, उस बिहेवियर पे कैसा रिमार्केबल डिसीजन हो रहा है, तो फिर उसके बाद आपका स्कूल इंटरवेंशन भी कर सकता है। स्कूल इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद ओडीडी में इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज to help them manage to their behavior and improve academic performance. Teachers and support staff can work with parental and mental health professional to develop an individualized plan for the child. So this is all about ODD, and in my next video I will talk about intermittent explosive disorder, that is IED. Okay, so in my this video, in my this series of videos, I will all be covering about disruptive impulse control disorder. All the disorders will be completed. Okay, so this is all about
ODD. And if you have any questions in your mind about ODD, please comment in my comment section. If you have the information, if you have details about me, you can ask the questions. And if you have any doubts, please ask in my comment section. Thank you.